Having economic causes. Economic causes arises due to certain changes in the market. ठीक है, ड्यू टू सर्टन चेंजेस इन द इकोनॉमी एज अ होल. लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, सो ऑल द कंज्यूमर्स दे आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, सो एनी डिसएडवांटेज क्रिएटेड ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट दैट कन्फ्रंटेड विद द इकोनॉमिक कॉजेस. ठीक है, बिकॉज ऑल द कंज्यूमर्स दे आर forming the part of the economy. Last we are having that is the physical causes. Physical causes means when we are talking about the physical thing like I have given you the example regarding the technology also. You can over here take the example of the machinery. ठीक है, machinery is in the physical form. ठीक है, that can be seen, that can be touched. And by using the machinery, the business houses, they are doing the production on the large scale. They are improving the quality of their products also. ठीक है, so any change in the technology, ठीक है, may result in the machinery being outdated. One new technology is there in the market. ठीक है, as a result क्या होएगा? Consumer will shift their preference from one product to the another product. So that is regarded as the physical causes. These all are the causes of the business risk. Last topic we are having that is the types of the business risk. We are having two types of the risk, that is the insurable risk and non-insurable risk. Insurable risk means the risk which can be insured. ठीक है, जिसके बजाय हमें इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है उसको हम इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं. एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क मीन्स दे आर वी कैन से द रिस्क विच कैन नॉट फॉर विच वी कैन नॉट क्लेम अप द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज रिगार्डेड एज द नॉन इंश्योरेबल रिस्क. ठीक है, इंश्योरेबल रिस्क मीन्स यू कैन टेक जर्नली. वी हैव डन द एग्जाम्पल, वी हैव डन नेचुरल कॉजेज, we have done physical causes also. ठीक है, तो basically the natural risk as well as the physical risk, ठीक है, these both are insurable in nature, means for which we can claim up the compensation. ठीक है, like for example death is the natural process. किसी को ये तो नहीं पता कि हाँ आज हमने मर जाना या नहीं मरना. ठीक है, so death is regarded as the natural risk. And you might have heard that your parents, they are talking about that we have taken life insurance policy. Life insurance policy means that we are insurance company have given the insurance related to the life of the person. ठीक है, that whenever the person died, ठीक है, then they are giving up the amount of the compensation to the family of the person who had died. ठीक है, so these are regarded as the insurable risk. Next we are having that is the non-insurable risk. Non-insurable risk means you can take the example of the economic, ठीक है, causes, or you can take the example of the human risk. They are non-insurable in nature. अब there is sudden change, ठीक है, in the taste and preferences of the consumer. ठीक है, तो कंज्यूमर ने एक बिजनेस हाउस का प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे बिजनेस हाउस का यूज करना शुरू कर दिया. ठीक है, सो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर रिस्क इज नॉट इंश्योर्ड. ठीक है, उसका कोई क्लेम नहीं है, उसका कोई कंपनसेशन नहीं है. सेम इज द केस विद द ह्यूमन रिस्क ऑल्सो. द रिस्क विच अराइजेज ड्यू टू द डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, उसको कोई कंपनसेट नहीं कर सकता. ठीक है, सो दीज बोथ आर रिगार्डेड एज द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, दैट इज इंश्योरेबल एज वेल एज नॉन इंश्योरेबल. ठीक है, सो इन दिस मॉड्यूल वी हैव टॉक्ड अबाउट द बिजनेस रिस्क, द नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क, causes of the business risk as well as the types of the business risk. Bache, with this we have finished up our first chapter, that is the nature and purpose of the business. I have given you the homework assignment also time by time, and please
Do your work on the regular basis so that you people must have the clarity of each and every concept. Okay? And in the next module, we are starting up with the forms of business organization. Thank you.